Pleomorphic adenoma. It is a benign salivary gland tumor. It accounts for over 90% of the benign salivary gland tumor. तो जितने भी benign salivary gland tumors हैं उनका 90% pleomorphic adenoma होता है. Typically presents as a painless swelling at the angle of the jaw. Most commonly found in the superficial lobe of the parotid gland, followed by submandibular gland. So most commonly it is found in superficial lobe of parotid gland. Parotid gland के superficial lobe में सबसे common होता है, उसके बाद submandibular gland में, and rarely in minor salivary glands. क्या parotid gland, submandibular gland, sublingual gland, ये सब major salivary glands होता है, और जो माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स है उनमें ये रेयरली होता है. प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा इज़ रेयरली इन माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स. प्रीडोमिनेंटली डायग्नोज्ड इन इंडिविजुअल्स एज्ड बिटवीन देयर 4th and 6th decade, with rare cases in children, more common in women. So this is more common 40 to 60 years of age में, children में rare होता है, and it is more common in women. Pleomorphic adenoma is more common in women और 40 to 60 years of age में common होता है, बच्चों में rare होता है. Believed to originate from the reserved cells of the epithelial, myoepithelial and ductal types. Origin of pleomorphic adenoma is reserved cells of epithelial, myoepithelial and ductal types. Reserved cells of epithelial, myoepithelial and ductal types. Gross morphology of pleomorphic adenoma. Since it is a benign tumor, it will have the characteristics of benign tumor, that is, it will be well demarcated, encapsulated. So this will be well marcated and encapsulated. बाकी it exhibits small, well demarcated, round and multilobulated characteristics. Small, well demarcated, round and multilobulated characteristic. Appears encapsulated but often shows finger-like extensions crossing the tumor capsule at multiple sites. यह तो कैप्सूल से सराउंडेड होता है, बट इसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कैप्सूल को क्रॉस करते हैं काफ़ी जगहों पे. ट्यूमर्स आर टिपिकली सॉलिड बट द कट सरफेस may display a variegated appearance with grey-white myxoid and blue translucent pseudochondroid area. Pleomorphic adenoma typically solid होते हैं, पर जो cut surface होता है that will have variegated appearance with grey-white myxoid blue translucent pseudochondroid area. So pleomorphic adenoma has variegated appearance. Variegated means diverse appearance, and the cut surface will display grey-white myxoid. Myxoid means mucoid like, and there will be blue translucent pseudochondroid area, pseudochondroid or pseudocartilaginous area. Microscopic features. Pleomorphic adenoma exhibit both epithelial and mesenchymal differentiation, earning them the name mixed tumor. Pleomorphic adenoma undergoes secondary malignant changes. Pleomorphic adenoma में epithelial, mesenchymal दोनों component मिलते हैं, इसलिए इनको mixed tumor बोलते हैं. बिकॉज पहले सोचा जाता था कि ये मल्टीपल जर्म लेयर्स से अराइज होते हैं, बिकॉज दे हैव बोथ एपिथेलियल एंड mesenchymal differentiation, and they also undergo secondary malignant changes. They are known as mixed tumors. The epithelial component comprises of ductal and myoepithelial cells forming ducts, acini, tubules, strands or sheaths. Ductal cells are typically cuboidal, while myoepithelial cells appear flattened or spindled. जो एपिथेलियल कंपोनेंट है उसमें डक्टल और मायोएपिथेलियल सेल्स आते हैं.
एपिथेलियल कंपोनेंट में डक्टल और मायोएपिथेलियल सेल्स आते हैं जो कि डक्ट, एसिनाइड, ट्यूब्यूल्स, स्ट्रैंड्स और शीट फॉर्म करते हैं। डक्टल सेल्स आर टिपिकली क्यूबॉइडल while मायोएपिथेलियल सेल्स आर फ्लैटेंड एंड स्पिंडल। डक्टल सेल्स जो होते हैं वो क्यूबॉइडल होते हैं। डक्टल सेल्स आर क्यूबॉइडल and myoepithelial cells are flattened or spindle shaped. The background stroma may have various characteristics such as mucoid, myxoid, pseudochondroid and hyaline component. तो जो mesenchymal component है जो स्ट्रोमा है उसमें म्यूकॉइड, मिक्सॉइड, pseudochondroid या हाइलीन components होंगे।